Hello friends, Namaskar दोस्तों. This video is specially dedicated to the Rainbow Setup users. Rainbow Setup users बहुत बार मुझे बोल चुके हैं कि मैं थोड़ा समझाऊं कैसे बहुत आसानी से dynamic hedging is possible with the Rainbow Setup. So this video is about that. So we'll start directly with the screen sharing. जो लोग रेनबो सेटअप यूजर्स हैं काइंडली नोट कीजिए कि दिस एक्सेल विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन योर ड्राइव. नाउ दिस एक्सेल इज बेसिकली एन एग्जांपल. This includes how many stocks we have in our portfolio. This is the current market price of the stock. This is the quantities of those stocks, how much we have. Obviously, we will have a total portfolio value. This is the total portfolio value we will have. And next we will have Nifty current price. And Nifty contract size, suppose it is 50, currently इसको reduce किया गया है. Suppose it is 50, example की तरफ समझते हैं. So let's understand this Mahalife and others. Let's go to MAH, Mahalife, sorry, Mahindra Life, all. This is Mahalife. Mahalife, we will go to the weekly chart. We will note the current price, which is 631, and we will also go to the cash stocks weekly setup. Let's check if it's there in the weekly. Yes. So now we have the current price of Mahindra Life space, Mahalife, which is 631.55. And we also have this, what is called the stock beta. I hope आप लोग जानते हैं what is beta. Beta is equal to the stock का जो volatility, stock का जो movement, उनका relation with the broader stock market. Broader stock market की return pattern के साथ how इनका return pattern and volatility से these are how related. So this is one coefficient अगर उसको represent करेगा, that is beta. So if we go for a static hedging of our portfolio, suppose let's put current market price at 631 and stock beta at 1.1. Next जो है that is Nuvama. So Nuvama, Nuvama Wealth Management. Here I have a mark 5290 and a stock beta of 0.7. Then we have 5290 and the stock beta of 0.9. Sorry, 0.7. Then we have Castrol India. Castrol India में हम लोग नोट कर रहे हैं, this is the stock beta and the price 210, 211 मान लेते हैं, 210.8 है. So 211 is the Castrol price and uska beta, this is 1.3. So the beta is fine, 1.3. Next हम लोग जा रहे हैं Geo Financial Services. So Geofin, which the price is 354 and stock beta of 0.5. So we have Geofin at 354 and stock beta of 0.5. Fine. So next जो है हमारा next जो है हमारे Jubilant Pharma GNFC, Jubilant Pharma. And Jubilant Pharma current price 651, stock beta 101.4. 651, stock beta of 1.4. We had Ipca Lab as well, जो miss हो गया, Ipca Laboratories. First, we are considering weekly chart. Suppose you want to hedge it for more shorter term.
You can check the same thing using the daily chart. This is a low beta stock 0.31327. ऐसे स्टॉक ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो वैल्यू पोर्टफोलियो का जो वोलेटिलिटी है इट ब्रिंग्स इट डाउन विथ लो बीटा. सो 0.3 इज अ वेरी लो बीटा स्टॉक. दैट मींस इसका जो रिटर्न रिलेशन, इसका जो वोलेटिलिटी पैटर्न इज लेस रिलेटेड टू द मार्केट मूवमेंट. Suppose market moved like 1%, so this stock may move around 0.3% or higher. That is the general conclusion. एक लेमैन्स कंक्लूजन हम लोग मान सकते हैं. सो नेक्स्ट जीएनएफसी. तो टाइट जब डाउन टर्न आता है, सम करेक्शन आता है, दैट टाइम वी वांट आवर पोर्टफोलियो जो है उसमें लो बीटा स्टॉक थोड़ा बहुत रहे, which will be helpful. So 683 and beta is 0.8. Next is GNFC 683 and stock beta is 0.8. Then we have Gujarat Gas, Gujarat Gas Limited. We have a price of 573 and stock beta of 0.6. 573 and stock beta of 0.6. Then we have Capacite. Capacite Infra Pro. The price is suppose 300 and stock beta is 1.1. So Capacite is 300 and stock beta is 1.1. आप लोगों को clearly समझ में आ रहा है what is I'm doing. Then we have Biocon Purva. Let's look at Biocon. Biocon में बहुत बार breakout की attempt आ रहा है, not successful. 265 and stock beta is 1.5. So we will go Biocon 265 and stock beta is 1.5. Then we have Purva 1.6 stock beta and 355. So 300, this is one stock which has gone up. So this is a high beta stock. 1.6 is a pretty high beta stock in a weekly chart. Inox Green 140 and stock beta is 2.5. So now we have 140 and stock beta of 2.5. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक फैक्टर नेक्स्ट करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आसानी से आ गया. करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी इज करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. You will find a total portfolio value which is sum of this total value and Nifty value. What is the current Nifty value? अगर आप यहाँ पे let's look at the Nifty chart and you can see it's 22,272. So here we will put 22,272. So one Nifty का static value अगर लेंगे वो A आ रहा है 11 लाख के आसपास and this is our portfolio value. So portfolio value को Nifty value से divide करके we will getting somewhere around 2.6 is the 2.66 is the. तो यहाँ पे दो quantity 2.6 एक static hedging create करेगा. Whereas dynamic hedging के लिए we are considering stock factor. Stock factor is stock का जो value divided by portfolio का total value, मतलब stock का कितना weightage है उस portfolio में. Like Mahalife has around 7% weightage in the portfolio. And finally stock beta, final portfolio stock beta is stock factor multiplied by stock beta. So finally जो portfolio beta हम लोगों को मिल गया, this is 1.15. ये 2.66 का value से we'll have to multiply our portfolio beta. Then actual हमें मिलेगा कितना put option खरीदना चाहिए. If weekly chart हमारे हैं, if weekly chart which is a bit long term, आप थोड़ा short term volatility से you are not bothered about. अगर ऐसा case है, you are a bit of long term positional player, then yes, you can go for the weekly.
सपोज अगर आपको लग रहा है कि एक महीना बहुत वोलेटाइल रहेगा, दिस कमिंग 1.5 months, then you should go for the daily chart and do the same analysis. So 3.06 या तो 3 पुट लेने से आपका पोर्टफोलियो बेटर हेज होगा। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि पोर्टफोलियो जो बीटा हो गया, तो समझ लीजिए यहाँ पे बीटा सबका बढ़ गया, सपोज 2, 2.3, 1.3 है, ये 0.5 जो है वो बढ़ के 1 हो गया, देन वी हैव 1, then we have 3, suppose we have 2 portfolio on Gujarat Gas, we have 1. So now this is, and Biocon, suppose Biocon Purva, we have for beta of 3. That means portfolio beta in such a case, अगर आपका portfolio high beta stock से भरा हुआ है, you will require a higher number of puts to do a much better dynamic hedging. So this is the value number of puts. तो यहाँ पे जो वैल्यू दिखाया जा रहा है उस हिसाब से कि वही सेम स्टैटिक के हिसाब से सिमिलर ही करना चाहिए कि 2.66 या तो आप 2 कीजिए या तो 3, बट उससे गलत हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो विल नॉट बी प्रॉपरली हेज बिकॉज इफ द स्टॉक वोलेटिलिटी इज मच हायर देन द मार्केट वोलेटिलिटी। सो कैसा स्टॉक वोलेटिलिटी एंड मार्केट वोलेटिलिटी के बीच में जो रिलेशन, दैट इज वेरी वेल डिफाइंड बाय द स्टॉक बीटा। नाउ ये स्टॉक बीटा इजीली अगर आप रेनबो सेटअप में जाएंगे एंड यू गो टू द स्टॉक के इसमें स्टॉक कैश स्टॉक्स लेस देन वीकली या तो कैश स्टॉक्स वीकली, दोनों में अवेलेबल होगा आपका पोर्टफोलियो बीटा। ओके करते ही यू विल बी एबल टू स्टॉक अल्फा व्हिच इज वोलेटिलिटी एडजस्टेड रिटर्न or stock beta, this will be available to you. So this is the way to do a dynamic hedging to your portfolio during downturn. For example, currently Nifty में जो downside pressure आ रहा, if you look at the weekly chart, you'll be able to see the momentum crossing down. So this could be a good time to do some risk management. Do some risk management यहाँ पे and take, अगर आपको hedge करना है आपका portfolio, तो kindly use this dynamic method of hedging. So that's all, my friend. All the best to you. Thanks again for watching this video, and as always, once again, happy trading.